welcome some developments from Punjab, wherein the indefinite strike by state's 108 Ambulance Employees Association has entered the fourth day. The contractual employees are demanding the Aam Admi Party government take back control of the service from the private company. Now, more than 300 ambulances are stationed at the toll plaza in Ludhiana, but now the striking ambulance drivers have set a deadline for the Punjab government to hear their demands, or else at 12 p.m. today they have threatened to block the highways in the state. 15 ਤਰੀਕ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਊਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਰਹੂਗੀ। ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ 108 ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। 108 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰੇ। 108 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 8 ਘੰਟੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ रुपये ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। इस वक्त हम लुधियाना में हैं। पंजाब में जो 108 एम्बुलेंस सर्विस है वो बंद हो गई है। ऐसे में जो मरीज हैं उनको निजी एम्बुलेंस और जो दूसरी चैरिटेबल ट्रस्ट हैं उनके द्वारा जो एम्बुलेंस सर्विस चलाई जा रही है उसका सहारा लेना पड़ रहा है। आप देखिए इस वक्त सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर से एक मरीज हैं जिनको यहाँ से रेफर किया जा रहा है। और वो देखिए जो एम्बुलेंस है ये एक निजी जो संस्था है, चैरिटेबल ट्रस्ट है वेदना नाम की, उसके द्वारा ये मुहैया करवाई गई है। और इसी तरीके से आज पंजाब में बहुत सारे जो मरीज हैं और उनके तीमारदार हैं उनको एम्बुलेंस की तलाश में दर दर भटकना पड़ रहा है। इससे पहले जो पंजाब सरकार द्वारा 108 नंबर की जो फ्री एम्बुलेंस सर्विस है जो निःशुल्क मुहैया कराई जाती है मरीजों को, वो चलाई जा रही थी। वो उसको लेकर जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पंजाब में इस वक्त चल रही है और करीब 325 जो एम्बुलेंस है उनका चक्का पूरी तरीके से जाम हो गया है। इसलिए मरीजों को इसी तरीके से जो निजी एम्बुलेंस हैं उनका सहारा लेना पड़ रहा है। Well, the contractual employees are demanding the cancellation of the renewed contract with the private emergency medical services provider, and the prime demand is a pay hike from rupees 9,500 to rupees 35,000 with an employee pay raise of 10% annually. They say that their pay structure is the same for the past 12 years. So let's get you a ground report from the epicenter. मोहाली सिविल अस्पताल में है। 108 एम्बुलेंस स्ट्राइक के बाद आम मरीजों को खासी दिक्कत हो रही है और आप देख सकते हैं कि रिक्शा में, बैटरी रिक्शा में जो तमाम मरीज हैं वो इमरजेंसी में पहुंच रहे हैं। आम दिनों पर 108 डायल करने के बाद तुरंत एम्बुलेंस आ जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं एक्सीडेंट में घायल पेशेंट हैं जो उनको अभी यहाँ पर लाया गया और आप देख सकते हैं व्हील चेयर पर उनको बिठा के ले जाया जा रहा है और बैटरी रिक्शा से वो यहाँ पर उतरे हैं। बहुत सारे जिलों में हम देख रहे हैं कि लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जब मरीजों को सही समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। कहाँ से लेकर आए हैं पेशेंट आप? ये वहाँ जुजानगर से। क्या हो गया इनको? स्लिप हो गई एक्टिवा। तो फिर आपको बुलाया है या आप एम्बुलेंस नहीं मिली इसलिए लाए गए? नहीं, वो वहीं से लेके आए थे हम। हाँ जी, ठीक है। तो आप देखिए ये बैटरी रिक्शा पर जो एक पेशेंट है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। 108 की करीब 325 से ज्यादा जो एम्बुलेंस हैं वो स्ट्राइक पर हैं और इस वक्त लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा पर तमाम जो कर्मचारी हैं वो बैठे हुए हैं और उन्होंने अल्टीमेटम दिया सरकार को कि अगर जल्द ही मुख्यमंत्री से बात नहीं कराई गई तो 15 जनवरी को दोपहर 12 बजे के बाद पंजाब के तमाम हाईवे ब्लॉक कर दिए जाए। So, well, that is a threat coming in from the workers, wherein they are saying if their demands are not met, then after 12 p.m. today, they are going to block the highway. So, let's have a look at the demands that have been posed by them, wherein they say that their pay hike should be increased from 9,500 to rupees 35,000. They say that their pay is same from the last 12 years. They say that the pay rise of
that the pay should be risen by 10% annually for the employees. That is another demand that has been put up by the workers. Cancel renewed contract with private agency. That's the prime demand by the workers that has been put up this time. They also say that reinstate workers sacked by the corporation. And the fifth demand that has been put forward is that the employees must be on the rolls of the government. So these are a few demands that have been put up by the workers. They have been protesting since the last few days in the state of Punjab, and now today they have said that if these 5 demands are not completed, are not fulfilled by the state government, they are going to block the highways today post 12 p.m. onwards. So let's also get you the reactions which are coming in from the BJP side on that matter. पंजाब में एम्बुलेंस सर्विसेज 108 एम्बुलेंस सर्विसेज बिल्कुल ठप पड़ी है, क्योंकि इसके एम्प्लॉइज जो हैं वो स्ट्राइक पर चले गए हैं। 72 घंटों से स्ट्राइक पे हैं, मरीज तड़प रहे हैं, हॉस्पिटल ले जाया नहीं जा पा रहा उनको, और किसी की कितने भी खतरे में जान क्यों ना हो, वो चाहे तड़प तड़प के मर जाए पर उसको एम्बुलेंस नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सारा पैसा पंजाब से, पंजाब का पैसा उजाड़ा है गुजरात, गोवा, हिमाचल जाके। सैकड़ों करोड़ रुपया प्रचार में लगाया, सैकड़ों करोड़ रुपया जो पंजाब के हकों का था वो पंजाब से बाहर जाके उजाड़ा, और यहां तक कि कई करोड़ रुपया एक्साइज के चोरियों से बचने के लिए, एक्साइज के केसों से बचने के लिए खर्चा जा रहा है, लेकिन एम्प्लॉइज को तनख्वाह नहीं दी जा रही। Every section and segment of society is unhappy in Punjab because of the Aam Admi Party government's failure, its lack of ability to keep promises, and its constant U-turns. These are long pending basic demands that should have been fulfilled. The Aam Admi Party government made a lot of big promises, but now when the time comes to fulfill these promises, instead of that, when these people go on strike or they protest for their basic rights, then strong action is taken on them. Farmers and teachers are beaten up and roughed up. One hopes that no adverse impact happens because of this protest, and that this protest should be called off as soon as possible because people's lives are at stake. But the government must be held responsible. It is an utter failure on the part of Bhagwant Mann and his government. They are more interested in just canvassing and campaigning for elections, for advertisement. So while what the BJP is saying, Akali Dal and the BJP were at the helm of affairs. In 2018, over 400 luxury vehicles were approved by the Punjab government for the Chief Minister, ministers, MLAs and bureaucrats, and this was at a time when Amrinder Singh was with the Congress and was a Chief Minister. Now, can the Bhagwant Mann Sarkar wash its hand off? Immediately after coming to power in Punjab, the Aam Admi Party government in the state spent over rupees 37 crores on advertisements in news channels, radio and newspapers, but when we asked the questions, there was no response from the Aam Admi Party. Take a look. Quickly, I'll take that question to Atishi as well. Atishi, there is one important thing which is coming in breaking right now. I just want to take one reaction of you. 108 ambulance services suspended by the Employees Association in Punjab as well. Ma'am, what you wanted to say on this, because this is something which has been trouble where Atishi not responding on the question over there in. Going across to my colleague Gurpreet over the phone line. Gurpreet, today it is when they have threatened that after 12 p.m. they are going to block highways if the demands are not met. Any word coming in from the state government? Well, so far there's no word from the government. At the same time, we have seen these people who are on the protest for the last 2 days. They are going to intensify. What they have said on 9th of January, there was a meeting between the minister as well as these employees who are on the strike, but no conclusion has come out. Now, the one side, what we have learned from the government sources, they say they need to give more time. They are ready to make a committee so that they will look into all the aspect. On the other hand, what we have learned from these employees, they wanted immediately solution of this problem, because they say in the 9 months they have been asking the government to resolve this matter, but nothing has been done, and that's why they are forced to go for this strike. And today till 12 p.m. This is the peaceful protest which is going on, and they have decided to intensify this protest by blocking the roads of Punjab. They
they are saying that they will block all the roads if the government is not going to listen their voice, and they had asked to hold a meeting with the chief minister so that a solid word should come out, and they should get some solution because of this strike which is already going on. And now let's see how the government is going to resolve, because 108 is a free service for the people in Punjab, and it has been affected for the last 2 days, and a lot of people are suffering in the state of Punjab. Now it's the government's responsibility how they are going to take a call on this issue, because one side the employees have already made it very clear, if there is no solution, they will intensify their protest, they will block the roads, and they will intensify their protest further. Well, of course, now it's to be seen that what the state government is going to do about it, because as far as the protesters are concerned, they have set a deadline for the Bhagwant Mann Sarkar, and that is the 12 p.m. Well, thank you, Gurpreet, for sharing all those quick updates, but let's move on.